वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं सिद्वा। आज हम बहुत सारी रेसिपीज बनाएंगे, तो मेरा साथ दीजिएगा और रेसिपीज देखिएगा। चिकन बोनलेस अगर आपके पास हो, चिकन ब्रेस्ट ले लो, इस तरह क्यूब्स में काट लीजिएगा। fan is on commissioning mode. क्यूब्स It में is काट लीजिएगा और फिर जो the previous स्टिक्स history होंगी of this उसको fan, आप पानी total में run भिगो के रख time, लीजिएगा ताकि वो जले ना ग्रिल पे and या the फ्राइंग year, पैन पे जब आप how उसको many फ्राई hours, and humidity 60%. If it's 60% above humidity in this room, this fan will switch on automatically. And if it falls below 40%, it'll switch off, thus preventing mold and algae, as can be seen in the corner. There was loads here, but it's been renovated, the whole room. I can recommend others to install such a fan. Nice, powerful fans. Amen. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आज जायके की बात में कुकिंग एक्सपर्ट नासरा खान, जो आपको मज़े मज़े के खाने पहले भी सिखाती रही और आज भी आपके लिए एक और डिश लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी, झटपट बनने वाली मज़ेदार किस्म की। ये है मैक्सिकन राइस। Good, you too. What are you? बहुत मज़े की होती है।